Hello guys, good morning. Good morning everyone. Thank Good you. morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. So guys, I appreciate those who have sent me this report with the conference call. So guys, those who are not doing, those are just writing the result update. I have specifically mentioned that results update are to be given with conference calls. If you are not listening at the conference calls and you are just writing a newsletter, it means that you are not you're not doing things on a continuous basis. It is just about just an update that you are not interested into equity research and just मैंने बोला है अपडेट करने को इसके लिए कर रहे हो. तो सब के सब वीडियोस ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे है फॉर एवरी ग्रुप. तुम कोई भी बैच में हो देखना, because without Excel file, without conference call, and whenever you write about result update, you should have a report of it. वरना लिखना भी मत result update. It's a waste of time. कोई कुछ काम में नहीं आएगा in your interviews. So I think Aniket have sent and Neil have sent, Darshan have sent. So we'll have that. We'll Sir. have a look at those people. Yeah. Sir, this is 𝗖𝗹𝗹, sir. I have also sent company profile, sir. Sorry. This 𝗖𝗹𝗹, sir. I have also sent company profile yesterday, sir. I got, yeah. Okay. I know. I have seen. Yeah, I will have a look. Yeah, But what about this update? This. We are following auto sector now. Why are you No, not? sir. Hospitality, And sir. you have not made a report on automobile? Sir, I said no, sir. I have been bit busy these days, but coming days I will be doing subsequent works. Kiran, it only takes 1 day to make a report. Yeah, I will do it, sir. Yeah. For your information, it only takes 1 day to make a report. Max 2 days. Yes, sir. As soon as possible, I will be doing upcoming reports, sir. Fine. I will have a look at. I have put it into a pending list. I will, have a look at your report. Okay. Sir, like as we had discussed, sir, do you have any model or something like that to explain how we do EV with ये है ना उसमें वैल्यूएशन वो किसमें रहेगा ना तुम्हारे फाइनेंशियल मॉडलिंग केस में है ना वीडियोस में रिलेटिव कौन सा वैल्यूएशन वीडियो रिलेटिव वैल्यूएशन रिलेटिव वैल्यूएशन केस में देखो फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो फाइल है ना हाँ तुम जहाँ चलेगा तुम मत और अटेंड करो कॉल. सर वो 3 ईयर फोरकास्ट वो कैसे करना होगा इस इंडस्ट्री का तो मेरे को मालूम नहीं है तो कैसे करना होगा सर तो कंपनी पता होना क्या करता है वो कंपनी तुम्हारा. हाँ सर वो पिजन सर वो सब बुकवेयर के प्रोडक्ट्स बनाता है हाँ तो वो इंडस्ट्री देखना ना कितने इंडस्ट्री लेना ना हमेशा इंडस्ट्री का उसका मार्केट शेयर कितना है देख लेना एआई को पूछ लेना क्या है मार्केट शेयर बढ़ने वाला है कि नहीं कैपेसिटी एसेट टर्नओवर से करना है. उसका सर कैश फ्लो तो ना के बराबर मतलब बहुत ही कम है कैश फ्लो है उनका तो ईवी भी तो सही करना पड़ेगा सर ये बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन कैसे देते हैं बाय मतलब करंट प्राइस के ऊपर होगा तो बाय है. हाँ बट जैसे कि सर हाँ ठीक है वो रिलेटिव वैल्यूएशन वाला मैं देखूंगा बट उसमें जैसे हमको ये पता चलेगा कि उसका सही ईवी बीता क्या होना चाहिए मल्टीपल राइट देखो मेरा ऐसा नहीं होता है हिस्टोरिकली तुमको तुमको कैसे वैल्यूएशन पता चलेगा क्या होता है तुम इतना एक्सपीरियंस हो गया ईवी बेटा ऐसा मुझे पता होगा तो मैं करोड़पति नहीं बनता. राइट तो तुम सर क्या बेच लोगे तुम क्या बेच लोगे बेस क्या लोगे क्या बेसिस पे करोगे. मीडियन हिस्टोरिकल मीडियन हाँ तो बस वही है. तो मतलब अगर हिस्टोरिकल मीडियन के नीचे है तो बाई ऐसे हाँ ये हिस्टोरिकल पीरियड के ऊपर तो सेल. ओके और अगर उतना ही है तो फ्लैट होल्ड. तो तुमको बाय सेल और होल्ड देना ही नहीं है, तुमको बाय ही देना है तो वैसे रिसर्च करोगे बाय पर्सपेक्टिव से. अच्छा क्योंकि सर जैसे मैं देख रहा हूँ ना उसके मार्जिन्स कंटिन्यूसली श्रिंक हो रहे हैं तो इसके लिए हाँ तो अच्छी बात है ना मार्जिन करना स्विंग करेगा जीरो थोड़ी होंगे मार्जिन रिकवरी होगा ना. हाँ हाँ तो मतलब अंडर वैल्यूड है हाँ ऐसा जरूरी नहीं है वो कब रिकवरी होगा क्या होगा वो बताना सर 1 साल नहीं 2 साल बाद होगा इसका रिकवरी. हम्म उल्टा जिस कंपनी के मार्जिन गिरते हैं वो तो बाइंग बाइंग के लिए ही आता है. राइट जेल ठीक नहीं है आ सर रहा है जेल ज्यादा तो नहीं आ रहा है कौन सा ओके तो कुछ अनिकेत नहीं कम है स्टार्ट टाइम होटल्स. कम कैसे 120.
Okay, So, Aniket. yeah, good morning, everyone. Yesterday, Sami Hotel posted their Q3 FY26 result, and I'll be walking you through like what were the results and what were the key highlights. So, their revenue from operations increased 14.2% on a YOY basis to approx 3.3 billion, which was mainly driven by a approx 13% increase in the RevPAR, which reflects strong demand and better pricing. If we come on the cost side, F&B cost as a percent of sales increased 7.8%, while the employee benefit cost, which is the employee expenses and their salaries, declined by 14.7%. So this mix indicates like there was a good operating efficiency, and this as a whole reflected and expanded gross margins by 140 bips to almost 77%. If we come down to the EBITDA grew by 10.7% to 1.2 billion, and the margins declined by 300 bips to 36.2%. This is impacted by higher operating expenses. But if we come to their PAT level, that is the profit after tax, their profit grew sharply by around 111%, which is a good growth, and it standed around 0.48 billion. So this all numbers tells us like there was a strong operating efficiency, which was reflected in RevPAR and the employee benefit expenses, a stable margin profile, and a meaningful recovery in earnings quality. If we come down to their key highlights, the RevPAR stood at around 5,600, reflecting a 13.3% growth. If we break down the segment performance, the upscale segment reported an occupancy of around 71% and ARR of around 12,500 and a RevPAR of around 8,800. So in this upper scale segment, there are about 5 hotels and 1,100 rooms approximately. Then upper and mid scale segment achieved 71% occupancy and approx 8,000 ARR and RevPAR of 5,600. This is supported by 15 hotels and 2,100 rooms. And in the mid-scale segment, the occupancy was good at a 76%, ARR of around 4,400, and a RevPAR of 3,300. They have a majority of their hotels in mid-scale, around 12 hotels and 1,700 rooms. And if we see the breakup of the revenue, 42% came from upscale, 41 from upper and mid scale, and 17% from mid scale. And the management is also saying that the mix can change in the near future, and the upper scale segment can grow to around 60%. This shift can be this is because like the company is like ongoing a major rebranding and renovation in their upper scale segment. And if we come to their growth profile, there are around 4,900 rooms, and they also have a good pipeline around 473 rooms, which will be under rebranding. And the company will be adding around 1,500 new rooms through expansion and new hotels. If we come to their major brands, around 66% is contributed by Marriott, 17% by Hyatt, and 17% by IHG. Under IHG, Holiday Inn has the major share. And if we see their overall portfolio, they have Sheraton, Renaissance, Courtyard, Four Point, Hyatt Regency and Palace, and Holiday Inn Express. And they are adding new hotels under brands W Hotel, Westin, and Tribute portfolio. Yeah, sir. Okay. So what was the content? क्या हो रहा है आगे? What was conference call था क्या इसका? सर कॉन्फ्रेंस कॉल आज ही है 11 बजे, तो अभी चल ही रहा होगा. तो ये तो सुन लो पीपीटी ना पे फिर. तो सुन लो हाँ ना. भाई या सर Can leave ना. हाँ क्यों है? You can send. श्योर. हाँ, that will be better one. इसका ना मैं तुमको भेजता हूँ, मतलब ये कैसे बनाना है इनकम स्टेटमेंट ना. ये तुमने ऑलरेडी दे दिया, तो इसको फुल ईयर का यूजुअली लेते हैं. इनकम तुम्हें यहाँ पे दे दिया ना, तो यहाँ पे नहीं डालते वापस. ठीक है. ओके. एंड यहाँ पे वो चार्ट आता है ना तुम्हारा, वो ग्राफ कितना सैमी होटल्स कंपेयर टू टूरिज्म या निफ्टी, तुम जो भी ले सकते हो. अच्छा वो वाला डाल. वैसा है. ये अच्छा नहीं लगता ना, ये फाइट स्पेशल बहुत आ जाता है. यहाँ पे चार्ट तुम्हारे नाम आता है, वो सब यहाँ पे आता है. मेरा रिपोर्ट है ना, वैसे देख लेना, सेम टू सेम ही वैसे बनाना. एक बार सेंड डन. कर दो तुमको उस ग्रुप में. तो नीचे जो कॉन्फ्रेंस कॉल एंड होता है, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल का एंड होता है ना क्वार्टरली,
तो यहाँ पे तो बैलेंस शीट डालते हो, P&L डालते हो, ऐसा है। तभी फिर ये नहीं डालते यहाँ पे, ऐसा है पूरा। ठीक है, अभी के लिए इट्स फाइन। कॉन्फ्रेंस कॉल सुन लेना, फिर अपडेट कर देना, यू कैन लीव। Sir, thank you. वेलकम, गुड वन, गुड वन, अच्छा बना। त्रिशूल या सर। मारते पे बना ना, हाँ यस। या सर। सर मैंने प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बनाया अभी तक, मैंने सिर्फ ठीक है, हाइलाइट्स करके रखा है क्योंकि कल ही 8 बजे इसका ऑडियो आया था इसलिए। हाँ ठीक है, नो इश्यूज, अच्छा है, सुना या वो बड़ी बात, ठीक है सर। या एक्सेल फाइल है इसके या नहीं? यस यस सर, एक्सेल हाँ फाइल है, हाँ, मैंने ठीक है, हाँ वो भी शेयर किया है सर। अच्छा, ओके, गो अहेड, सॉरी मैं या देखा नहीं हूँ। hello everyone. So today I'm going to present the Q3 update for the Maruti Suzuki. So revenue increased by 28.7% year on year to 499 billion rupees, led by strong demand and a recovery in the small cars segment. Coming to the sales, so the total sales increased by 17.9% YOY to 667,000 units. Out of that, the domestic sales increased by 20.9% YOY to 564,000 units, which is driven by mini and small car segment. And also the mini and compact segment car contributed around 46.6% of the domestic volume. And the export increased by 3.9% to 103,000 units, supported by initial shipment for the new e-Vita, e-Vitara car. Sorry. Now coming to the EBITDA. So the EBITDA increased by 9.8% year on year to 55.7 billion rupees. EBITDA margin falls by nearly about 190 basis point due to फॉल्स नहीं the होता है, वन सेकेंड तो EBITDA margins डिक्लाइन बाय, फॉल्स नहीं होता है, चेंज करना okay, है फिर, okay, sir. नॉट अ प्रॉपर इंग्लिश, ओके, डिक्लाइन। Yeah. EBITDA margin declined by 190 basis point to 11.2% due to the higher commodity cost, adverse foreign exchange movement, and the one-time provision for new labor codes. Coming to ईयर the ऑन ईयर, PAT, yeah, त्रिशूल ईयर ऑन ईयर रह गया, yeah, sir. Okay. ईयर ऑन ईयर लिखना Now, रह गया। yeah, now coming to the profit. So the profit increased by 4.1% year on year to 38.8 billion rupees as the tax rate is decreased by 50 basis point. Now ईयर coming ऑन to the yeah. Now coming to key conference call highlights. So the first is eVitara gained strong global traction post launch. So after launching the eVitara, the company has already exported the 13,000 units over 100 countries, and it has currently reached to the 28 countries so far. And the UK is the top destination. And also the eVitara has secured the 5-star safety rating. The second is manufacturing expansion to drive future growth, एक future सेकेंड, demand growth. वन सेकेंड त्रिशूल, ये तुमने ये बिटारा का एक्सपोर्ट्स की बात की ना, हाँ जिमनी भी है, जिमनी भी है ना, हाँ सर. साथ में आना चाहिए ना, एक्सपोर्ट्स है तो। Okay, okay. जिमनी बताओ, हाँ। Yeah. So now coming to the Jimny export. So the company has crossed the Jimny export sales of 100,000 units, which is cumulative export. So and which is driven by strong demand in from markets such as Mexico, Austria, South Africa, Japan, and Chile. Now coming to the manufacturing expansion. वन वन सेकेंड त्रिशूल, ई विटारा एंड जिमनी को तुम एक साथ ही लिख सकते हो, ई विटारा एंड जिमनी लेड द ग्लोबल ट्रांजैक्शन पोस्ट लॉन्च, Okay, या sir. द एक्सपोर्ट्स ग्रोथ फॉर द मारुति, तो क्या है वो मुझे पता चलेगा ना। ई विटारा, फिर तुम अगर यूनिट्स भी लिख सकते हो, ई विटारा 100,000 यूनिट्स एंड सॉरी जिमनी 100,000 यूनिट्स एंड ई विटारा 13,000 यूनिट्स लेड द ग्लोबल exports for the Maruti, let the export for the Maruti। तो क्या होगा, मुझे आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो क्या हुआ ई विटारा और जिमनी में। ठीक Okay, है, sir. यू हैव टू मेक इट अट्रैक्टिव, हेडिंग अट्रैक्टिव, तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि मैं रीड करूँ। ठीक है, Okay, सर तो मैं वो दोनों क्लब कर देता हूँ. क्लब कर दो, हाँ, और Yes, दो तीन yes. ज्यादा बड़ा नहीं, तीन इसमें ही लिखना है, तीन पैराग्राफ, तीन लाइन Okay, सर। okay. Okay, sir. Yeah, so the coming to the manufacturing expansion. So currently, company has financed their plant for the the meet the capacity, meet the rising demand. So the first plant is in Kharkonda,
which has annual capacity of 250,000 units and will be operated by the April 26. The second is in Gujarat, which has also the same capacity of 250,000 units and which is expected to begin the operation in financial year 2026-27. Now coming to the fourth highlights, that is scaling EV charging infrastructure across India. So currently, Maruti Suzuki has already set up the 2,000 charging station across the 110 cities. 1,100 cities, which is with the help of the 13 partner operators. The company aims to enable 1 million public charging points across India by 2030. Now coming to the fifth highlight, which is accessible mobility solution for senior citizen and the person with disability. So currently company has launched the AR AI tested swivel seat for the WagonR, which is specially designed for senior citizen and the person with disability. And the last is strong growth in the vehicle finance solution. So company has launched the digital platform through which the people can apply for the loan, which is launched in 2020. So currently company has disbursed 2.5 million car loans worth 1700 billion, and the platform offers 35 finance partner across India for Arena and Nexa. Yeah, that's it, sir. Trishul, see, now इसमें ना I will say पूरे इसमें if I'm an analyst तो सिर्फ ई विटारा और जिमनी का ही बहुत बराबर था, Yes, sir. बाकी सब बकवास थे, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? क्योंकि ना तुमने अभी सिर्फ अपडेट दिया है। जो एनालिस्ट के साथ जो क्वेश्चन आंसर होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है, बिकॉज ये सब अपडेट है। किसने ऐसा किया है? मुझे बताओ, ये ऐसा क्या इम्पैक्ट है इसका फाइनेंशियल मॉडल पे? वैगनर ने स्पेशल डिजाइन दिया, क्या होगा उन पे? हाँ सर, फिर ये कुछ स्मार्ट इतना तो विजुअल मेजर। चालू किया है, क्या है? ठीक है, चालू किया है, ठीक है। कितना पोर्शन है पूरे मारुति के? मतलब मारुति गाड़ी बेचता है और तुम मुझे फाइनेंस की बात कर रहे हो, समझ रहे हो? हम्म। वो हार्डली कुछ इम्पैक्ट भी होगा उसको, पिनल को। हाँ सर, तो ये करेक्ट। अपडेट था, ये तुम लिख सकते हो लास्ट में। ये दोनों अपडेट थे कि जस्ट फॉर एन अपडेट सर, दैट वैगनआर अभी नया निकाला है, एक ग्रोथ फाइनेंस में ग्रोथ हुआ है। क्योंकि इससे रिलेटेड ये एक था जिमनी और दूसरा एक्सपोर्ट था। ये एक सच में अपडेट वॉज इम्पोर्टेंट कि क्या हुआ है, एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ था, एक्सपोर्ट में क्या कहता है हमको पता है, ई विटारा और जिमनी का ग्रोथ हुआ है। हाँ, ये एक मैन्युफैक्चरिंग, ये भी एक अपडेट ही है फिर। हाँ सर, करेक्ट। जो क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं ना एनालिस्ट और मैनेजमेंट में, वो सबसे उसका एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्वेश्चन में वो लोग क्या पूछ रहे हैं। हम्म। गिवन अ चॉइस, अगर तुमको मैंने पूछा है, मैनेजमेंट को क्वेश्चन पूछा, तुम क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, विच इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्री एंड द कंपनी। ओके। दिस आर जस्ट एन अपडेट। लिखा अच्छा है, मतलब ठीक है, तुमने सुना, अप्रिशिएटेड दैट यू हैव लिसन टू इट, बट फर्क होता है क्योंकि ये तुमने सिर्फ जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया ना, उसी की बात की है तुमने। स्ट्रेट अवे मैं बोल सकता हूँ, ये मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं सुना, बट तुमने जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया उसी के बारे में तुमने बोला। जो हाँ क्वेश्चन सर। होते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो लोग आगे फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं हमेशा। यस यस। हमेशा फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं कि ये तो हो गया, भी क्या। तुमने आगे सब पॉजिटिव बात की है, करेक्ट? स्टॉक 4% यस। कल से, क्या रीजन है? देखा तुमने स्टॉक को क्या हुआ? चार नहीं परसेंट सर, नीचे आज, से ऊपर हाँ जा रहा आज है। स्टॉक डाउन था, यस। आज नहीं, कल भी था, दो 2-2.5% डाउन। हाँ हाँ सर, 5 दिन से ऐसा ही कुछ तो डाउन ही चल रहा है हाँ, हमारे तो सर। तो कुछ तो है ना, कुछ तो रीजन होगा। अच्छा, तुमने अभी ये हाँ। बोला है, तुमने ये बोला ही नहीं, आज पेपर में आया था कि साउथ अफ्रीका में मैक्सिको पे जो टैरिफ लगाएगा उसमें प्रॉब्लम होगा। दे आर लुकिंग एट साउथ अफ्रीका। मैक्सिको इज अ टॉप प्रोड्यूसिंग, सॉरी, टॉप सेलिंग कंट्री फॉर मारुति। वो सब किधर है? कॉन्फ्रेंस कॉल में था वो सब चीजें। सर एक्चुअली उनका ऑडियो था ना, ऑडियो इतना क्लियर नहीं था, उनका कॉल कॉल नहीं तो ट्रांसक्रिप्ट का कैसे होता है पीडीएफ नहीं आया अभी तक। नहीं नहीं, तो जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल होता है ना चालू, तो तुमको वो रिकॉर्ड करना होता है लाइव। ओके। ये तुम रीजन नहीं दे सकते कि खराब था, ये था, वो था। हाँ हाँ। वो रीजन हो गया कि खराब था, बाकी लोगों ने तो बराबर लिखा है, यस। करेक्ट? तुमको वो कॉन्फ्रेंस कॉल ऑन लाइव ज्वाइन करना होता है, तुमको वो खुद ही रिकॉर्ड करना होता अच्छा। है। अदर ऑल्सो, तो मेन इट शुड बी अ फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट। कॉन्फ्रेंस कॉल मतलब ये तो, कॉन्फ्रेंस कॉल इज नॉट अबाउट गिविंग हाइलाइट्स, इट इज अबाउट
future looking statement that what has happened in the company, the stock is up or stock is down. सिर्फ हाईलाइट्स देना इज नॉट कॉन्फ्रेंस कॉल, वो तो एआई भी दे देगा. तो सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है कि व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज ना, अगर तुमने ऐसा लिखा है तो वो बोले ये तो एआई भी कर सकता है, तुमने अलग क्या किया. हाईलाइट्स ने तो एआई भी मुझे अच्छे से दे देता था. ऐसा है. सर ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन आंसर गो थ्रू करता हूँ उनका और अपडेट यस. करता हूँ रिपोर्ट. पूरा या चलो पूरा ये तो सिर्फ अपडेट है, इसमें इसमें हाईलाइट्स है ही नहीं. इट इज जस्ट एन अपडेट. यस विल बी सर. ऑलवेज ठीक. फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट कि क्या आगे क्या होने वाला है मार्केट में. यस यस. ओके. या. ओके. दर्शन यस सर. So can I try for the Maruti Suzuki? Is ने that बना okay? Yes, sir, I made it. Actually, है I've shared it with you too, I think. क्या आगे. Yeah, this is me, mine. Should I wait for her or how? इसी के लिए तुम्हारा लास्ट फाइव सी. Sir, I may send it to someone else, sorry. चल. Can I share my screen? हाँ शेयर है इसके लिए. Yeah, is it visible? Yeah. Yeah, so good morning, everyone. Yesterday, the Maruti Suzuki has released their quarter three result. So as we know that the Maruti Suzuki is the market leader in the PV segment, so they have reported the strong revenue growth. However, their margin were impacted by the higher commodity prices, increased fixed costs, and the lower pricing. So coming down to the financial performance, so Maruti Suzuki has reported revenue increased by 28.7% year on year to the 499 billion, driven by the 22% year on year volume growth in domestic market, supported by the GST rationalization, festive season demand, and the year end discounts. However, their gross margin has been declined by 223 bips year on year to 27%, impacted by the higher commodity price by 60 bips, 20 bips by rare earth supply shortage, and the 125 bips due to the one-time provision related to implementation of new labor codes. Further, about the EBITDA, it increased by 9.8% year on year to 55.7 billion, while the EBITDA margin declined by 193 bips year on year to 11%. As lower margin was partially offset by the decline in other expenses by 111 bips to 11%, mainly due to the lower promotional spending. As we know that a GST cut has happened. Talking about the पैट conference, नहीं लिखा. ऐसी पैट नहीं लिखा. so there was nothing much about the pad because the हाँ main. तो अपडेट डालना, पैट इंक्रीज बाय 10% या 20 जो भी है. Okay, we'll do that. हम्म. Coming down to the conference highlights, so company, as we know, the company holds 40% PV market share and reported the sales volume growth of 22% year on year to 564 K units. However, the demand for the financial year 27 will be reassessed by the management over the next 3 months, as the GST reduction has led to prepone and the or defer the purchase of the customer. Talking about the export part, the company holds the 46% market share in PV and reported a sales value of 82 billions and with a volume of 103 K units, up by 4%. However, the export growth remained in low due to they have missed the shipment to the South Africa caused by some logistical issue. Uh, During the quarter, the company has exported 13K units of 𝗖𝗹𝗹, 100K units of GV. आयुषी बात करते हो 13,000 नहीं बोलते. Okay, मेन्यू प्रेजेंट है ना. हाँ okay. हाँ 100,000 है. So we used to say 13,000, is it? Or 13? ये नहीं 13K लिखते हैं हम, बट व्हेन यू Hmm. प्रेजेंटेड इट इज 13,000 ओनली. Okay, got it. ओके. Okay, so during the quarter, the company has exported 13,000 units of 𝗖𝗹𝗹, 1 lakh unit of Jimny and 500 units of Victoria, which they have recently launched to 28 countries with UK as the top destination. Overall, the company has achieved the production of 2 million units in the calendar अच्छा year. 1 second आयुषी. 1 second. The third point, you can also mention ना कि कंपनी टोटल एक्सपोर्ट्स कितना कंट्रीब्यूट करता है पूरे इसका In terms of revenue, in terms of revenue. Yes, can say that ना.
The total because when you're talking about So exports, it तो would मुझे be नहीं पता around मतलब 20%. So 82 billion. हाँ Yeah. 20% है कुछ हाँ Hmm. 20% नहीं रेवेन्यू नहीं वॉल्यूम से रेवेन्यू तो नहीं मिलेगा तुमको एक्सपोर्ट का Oh, वॉल्यूम so से they have मिलेगा given in the conference call 82 billion. अच्छा इन एक्सपोर्ट reported a sale value of okay 82 82. billion हाँ तो कितना percent of the sales हाँ you can to put that 20% yeah Yes. approximate Or and yeah volume has given 103 1,03,000 units. yeah right Okay. Overall, during the quarter, the company seen a 7% increase in the first-time buyer as it was driven by the two-wheeler has upgraded towards the small or the compact cars. In quarter three, the sales was mainly driven by these six models: Desire, Swift, Ertiga, Fronx, Baleno, and the Wagoner, led by the GST cut, festive demand, and the year-end discounts. So we can see the demand of the Desire has increased by 48%. About the Swift, it has increased by 27% to 54,000 unit. About Attica, it has increased by 6% to 52,000. Francs also the same. It increased by 25% to 52,000 as on so on. About the cost part, वैसे ये नंबर्स सिर्फ दिसंबर के नहीं होंगे ना आई थिंक नहीं 40 नहीं सर, for the quarter. और हाँ तुमने नीचे दिसंबर 24 इसके लिए बोला so you Yeah, should write October to but December we'll change that. Yeah. okay हाँ yeah About the cost part, as we know that the commodity price has increased. So these includes my aluminum, copper, palladium, and rhodium are expected to be remain under pressure in the future term also. So they have mentioned that they don't have any kind of a hedging part in terms of these commodity, but they used to negotiate the price on the quarterly basis with the industry. Coming down to the rare earth part. So they were importing they were importing the large aggregates in the sub assemblies that has resulted in the cost inflation. However, the company expects the long-term benefit from the domestic rare earth manufacturing supported by the government initiative to attract the global manufacture to the India. Other key highlights is it is the passenger vehicle industry has declined 40 bips in the first half of the financial year 2026, but it has expanded by the 50 bips in quarter three, led by these the benefits which we have seen. So Maruti Suzuki has benefited much from this recovery, supported by their Alto also, has also re-entered into the top 25 selling models. एक सेकंड तुमने जो बोला ना पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री डिक्लाइन 40 बिप्स बट Yeah, एक्सपांडेड 2050. So it's around. पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री डिक्लाइन ना मतलब तो परसेंटेज में लिखते हैं ना वो क्योंकि तुम परसेंटेज कंपेयर नहीं कर रहे ना मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि 10% से 8% हुआ है Okay, okay, तो वो तभी बिप्स नहीं लिखते पैसेंजर इंडस्ट्री डिक्लाइन बाय 0.4% बट okay. एक्सपांडेड टू By कितना 20, 20 20.5. 20% हाँ 20% 20.5% इन Hmm. Q3 ठीक है कि वो परसेंटेज जब कंपेयर तब बिप्स लिखते हैं Okay. ओके Missed that. Yeah. हाँ So Maruti Suzuki has benefited from this recovery because their Alto has also re-entered to the top 25 selling models. So company has reported an order value of already 1,75,000 units with an inventory level of 3 or 4 days only. As we know that during quarter three, company has launched the Victorious under their SUV segment. And they have mentioned about their plant. So their Kharkhoda plant is expected to be operational from the April 2026. Additionally, the D line of their Gujarat plant with the 250,000 unit capacity is expected to be operational post the operation of the Kharkhoda plant. Further, company is expanding their footprint in the Gujarat through their second plant, as they have mentioned. Also, there is one wholly owned subsidiary of Maruti Suzuki. It's Maruti Suzuki Gujarat Limited, which is getting merged with the MSIL effective from April 2025. Post merger, there would be impact because earlier they was classifying all the cost under the material cost, but due to the merger with the MSIL, they would classify the material cost on related to material expenses only the under the material head,
Rest of the cost will be classified under their natural heads. So it will impact my EBITDA by 7 billion in the coming yearly performance. So overall, we can conclude that the Maruti Suzuki is expanding their plant to meet the demand of the customer as supported by the GST cut and all. Yeah. That's it. गुड गुड वन है। तो वो मैंने तुमको रिपोर्ट भेजा ना मेरा, उसमें तुम वो नीचे ना एंड में तुम अपना ये डाल सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लास्ट में एकदम यहाँ पे। I have not जस्ट seen it, but we'll अच्छा नहीं, see today. Yeah. अच्छा लिखा है ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट, ऊपर जाना, ये जो Hmm. लेफ्ट कॉलम है ना, वन सेकेंड, ये ना, व्हाई आर यू, ये वाइट रखो ना पूरा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड Okay. वाइट रखो ना, वो अलग मतलब एकदम लुकिंग वेरी Got डार्क it. लग रहा है, इट इज लुकिंग वेरी डार्क, यू कैन पुट इट व्हाइट, तो बाकी सब ऐसा रखो, पीछे का बैकग्राउंड सिर्फ व्हाइट रखो। यहाँ पे इन देखो परसेंटेज दिख नहीं रहा है, मतलब आई कैन नॉट सी फ्रॉम माय नेकेड आई कितना है, Okay. तुम आइदर डू इट व्हाइट और ये पुट इट थोड़ा निकाल के साइड में रख दो, या फिर ऊपर डाल दो इसके थोड़ी सी, मतलब वो यू कैन ना Hmm. ड्रैग कर सकते हो, तो मैं इसको ना यू कैन ड्रैग दिस करके इनपुट इट हो गया, तो क्या दिखे वो परसेंटेज कितने। Got it. Yeah. ओके दिस इज फाइन, यूनिट्स आर फाइन, सो टोटली फाइन, ये सब अच्छा है। सिर्फ ये थोड़ा डार्क लग रहा है। ये देखो, व्हाई आर यू इटैलिक क्यों करते हो, प्रोफेशनली रखो ना, व्हाई आर यू इट अननेसेसरी क्यों इटैलिक कर रहे हो, सीधे यहाँ पे ट्रेडी रखो। ठीक है. Yeah. ओके रेस्ट ऑल इज टोटली फाइन। So as like in the last call, you have mentioned that it should be future looking. So is it in the same way, or do I need to more improve in अदर this? हाइलाइट में था ना अभी फ्यूचर लुकिंग में स्टेटमेंट में, कंपनी दिस वाज अबाउट द प्लांट, Hmm. प्लांट क्या हो रहा है, फर्दर एक्सपांडिंग इनटू गुजरात थ्रू सेकंड प्लांट। अच्छा अभी Hmm. तुमने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी, तुम्हारे जो मैक्सिको का टैरिफ लग रहा है उसके बारे में तुमने लिखना मिस कर दिया। They have not mentioned it during the call. I don't know. Maybe I missed it or something. आज सुबह पर न्यूज़पेपर में तो आया था, So during the देख लेना conference अगर, call, yeah, we'll check again. हाँ वो राज न्यूज़पेपर में आया था, आर्टिकल ही था उस पर, तो वो Hmm. तुम लिख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रिजल्ट आया है तो ये भी नहीं आया ना, तो यू कैन ऐड इट इन योर क्वार्टरली रिपोर्ट। Okay. सी ऐसा नहीं होता, क्वार्टरली रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ वो हाईलाइट्स देने हैं, तुम Hmm. तुम्हारा भी एनालिसिस डाल ही सकते हो उसमें। Okay. वो हाईलाइट्स में अदर से हम लिख देते कि और हाईलाइट्स क्या थे, क्योंकि कभी कभी कोई चीज होता है जिसको कुछ रिलेशन होता नहीं है, जैसे अभी ये Hmm. प्लांट खोला है तो उसका कुछ हेडलाइन ही नहीं होगा, दिस इज वन अपडेट ऐसा। Yeah. ऑर्डर बुक इतना है, दैट्स अ गुड थिंग कि ऑर्डर बुक इतना है, तो ये भी एक फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट हो गया था कि ऑर्डर बुक कितना है। Hmm. क्या ग्रीन द कंपनी लॉन्च विक्टरस ऑल्टो री एंटरिंग सपोर्टेड बाय, ठीक है ये भी था ना कि ग्रोथ क्या हुआ है, तो इसमें ऑब्वियसली मारुति केस में थोड़ा डेटा पॉइंट्स थोड़े और ज्यादा होते हैं, विच इज Hmm. नॉर्मली तुम्हारे बाकी कॉन्फ्रेंस कॉल में होते नहीं है। Okay. बट ना यार इट इज फाइन, मतलब अभी तुमको पूछा गया है ना क्या है, व्हाट आर यू, व्हाट अभी ये तुमने किया, द नेक्स्ट Hmm. क्वेश्चन विल अराइज, व्हाट इज योर थॉट्स ऑन मारुति, ऐसा है। क्या Okay. है व्हाट इज योर थॉट्स ऑन मारुति, तो वैल्यूएशन होता है ना, फिर फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं उसके, तुमको क्या Hmm. करना है अभी नेक्स्ट, तुम क्या करोगे, वैसे कॉस्ट बढ़ गया है, तुम्हारे Hmm. मार्जिन क्या हो गए आगे जाके, वन टाइम लेबर कॉस्ट है तो आगे जाके क्या होगा, वो कॉस्ट विल डिक्लाइन या मार्जिन वापस उसके नॉर्मलाइज हो जाएंगे। Yeah. So व्हाट इज द इंडस्ट्री, तुमने लिखा पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री डिक्लाइन 0.4%, अभी 250 बेसिस पॉइंट, तो ये तो जीएसटी इम्पैक्ट वन ऑफ था, अभी आगे Hmm. क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना इतने टाइम से, तुमको वो Hmm. एनालिसिस करना है। एंड अभी जी यू हैव टू रिलेट इट विद द स्टॉक प्राइस, भी स्टॉक प्राइस 4% नीचे है, तो यू हैव टू प्रूव कि 4% क्यों नीचे है वो, इज इट वन टाइम डीप, या यू शुड Hmm. अवॉइड द स्टॉक एज ऑफ नाउ। कैफे नॉर्म्स के बारे में बात, कैफे नॉर्म्स का भी बात तो हुआ होगा ना कॉन्फ्रेंस कॉल पे, या नहीं No, हुआ? they have not mentioned. No one have asked about the cafe norms. हाँ तो तुमको करना है कि तो कैफे नॉर्म्स यू नो इट्स अ ह्यूज थिंग दैट विल कम इन 2027, Hmm. फॉरवर्ड लुकिंग में वो भी एक तुमको ध्यान में रखना है। अच्छा कैफे नॉर्म नहीं पूछा तो तुमको यू कैन यू नो टेल योर रिक्रूटर या मैनेजर कि अरे सर कैफे नॉर्म्स का बोलना रह गया, अगर तुम एनालिस्ट कॉल पे हो तुमको वो पूछना है क्वेश्चन कि कैफे Hmm. नॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, Yeah. व्हाट डू यू लुक, मैनेजमेंट क्या क्या बात करे, तो ये सब इंडस्ट्री डेटा ना इसमें ऐड होना चाहिए, जो हम रेगुलरली पढ़ते हैं ना, हाँ. जो रेगुलरली हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर वो चीजें इस पे इनकॉर्पोरेट हो ना तो दिस मेक्स अ डिफरेंट रिपोर्ट, मतलब वो सच में लगता है कि एनालिस्ट ने बनाया। वरना क्या होता है,
वरना अगर तुमने कॉन्फ्रेंस कॉल पे जो चीजें वही तुमने बताई है, वो तो आजकल एआई भी कर रहा है, ऐसा हो रहा है। ओके, सो दैट इज वेर योर एक्सपर्टीज कम इन। Got it. ओके, सो वो इसके लिए वो बोला ना कि हमने न्यूज पढ़ते हैं। द रीजन आई डू दिस मॉर्निंग कॉल इसके लिए, क्योंकि मुझे भी पता है सिर्फ कॉन्फ्रेंस कॉल रिपोर्ट राइटिंग इज नॉट रिसर्च। रिपोर्ट तो आजकल कोई भी बना सकता है, तुम देखते होगे तुम्हारे लिंक्डइन पे लोग डालते रहते हैं रिपोर्ट लिखना, बट मुझे पता है दैट इज ऑफ नो यूज इफ देयर इज नो एनालिसिस इन इट। कुछ वैल्यू है ही नहीं उसका। ओके, तो जितने Got भी it. हम चीजें कॉन्फ्रेंस कॉल सॉरी इसमें पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, वो हमको सब इनकॉर्पोरेट करने होते हैं। तो कैसा होता है, हाउ द कॉन्फ्रेंस कॉल वर्क इज दैट यू आर ट्रैकिंग समथिंग फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स एंड अभी तुम्हारा रिजल्ट आया है। तो तुमने एक लास्ट 2 महीने में कितने ऑटो के न्यूज लिखे हैं जो तुमको लगता है इस पे इम्पैक्ट होगा, ऐसा होता है। दैट इज वाई द न्यूज राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। कैफे नॉर्म्स है, साउथ अफ्रीका की बात हुई, मैक्सिको के टैरिफ लगने वाले हैं, फिर उसके बाद न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। अभी तुम नंबर्स जो ऑटोमोबाइल नंबर्स आते तुमने उसमें दिखाया होगा कि विक्टोरस के सेल्स ज्यादा हुए नहीं है। तुमने बोला तो है यहाँ पे कंपनी हैज लॉन्च विक्टोरस, पर अभी कितने सेल्स हुए उसके, काफी कम हुआ है विक्टोरस के सेल्स। Yeah. विक्टोरस के sales बढ़ नहीं रहा है। प्लस देर आर 2-3 लॉन्चेस अभी यही सेगमेंट में, रेनॉल्ट इज कमिंग, डस्टर इज कमिंग। तो मैं तुमको पूछूं डस्टर का क्या इम्पैक्ट होगा ई विटारा का सेल्स पे? ई विटारा में जो फीचर्स है ही नहीं जो डस्टर में है। So you can, after the analysis, ki, sir, there is a huge demand. There is a huge competition coming from this all companies. को स्कोडा ने भी उसकी कुशा फेस लिफ्टेड लॉन्च किया है। ऑटो इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स एसयूवीज। तो ये एक अच्छी बात है कि टू व्हीलर्स अपग्रेड हो रहे हैं। टू व्हीलर्स अपग्रेडिंग फ्रॉम टू व्हीलर से फोर व्हीलर्स अपग्रेड हो रहा है। अच्छा, गुड थिंग। तो रूरल में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन रूरल इकोनॉमी? बिकॉज टू व्हीलर से फोर व्हीलर अपग्रेड होने वाले बेसिकली रूरल एरिया से ही होते हैं। तो इसका रूरल अर्बन स्प्लिट कितना है मारुति का? अभी नहीं तो शायद से पीछे के पहले के कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या कहीं ना कहीं तो लोग ने बोला होता है कि इसका रूरल अर्बन मिक्स कितना है, Okay. ऐसा That. होता है। तो दिस इज हाउ द एनालिसिस इज। इसके लिए वो एक्सपीरियंस मांगते हैं ना इंटरव्यू में, क्योंकि आज तुम मेरे एसोसिएट हो गए और तुमने ऐसा रिपोर्ट बनाया, अप्रिशिएट कि तुमने बनाया, बट फिर ऐसा था ये तो एआई भी बना सकता ना, मैं तुमको इसके लिए 15 लाख क्यों दूं? तुम मुझे बाकी सब जितने कॉन्फ्रेंस कॉल हुए उसमें मेरे ये आंसर्स दो ये सब चीजों का जो मैं पूछ रहा हूँ। अभी ये मैं क्यों पूछ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अगर Right. मैं प्रोफेसर होता तो मैं तुमको ये सब नहीं पूछता, करेक्ट ना? एक प्रोफेसर Yeah, को थोड़ी सब पता होता है, I agree. करेक्ट? तो ये होता है। तो दैट इज व्हाट दैट एक्सपीरियंस मैटर्स इन इक्विटी रिसर्च। प्रेशर काउंट तो उस पर मैं तुमको ज्यादा ग्रिल नहीं करूंगा, बट इफ यू कैन स्टिल आंसर इट, आई एम हैप्पी। ओके, दिस गर्ल हैज डन सम एनालिसिस ऑन, हैज डन एनालिसिस बिफोर द कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद तो सभी एनालिसिस कर सकते हैं, पहले क्या कर रहे थे, ऐसा है। ओके, Got your point, sir. ऑटो इंडस्ट्री तो इट, तो दैट इज व्हाई योर एक्सपीरियंस गेट्स। एंड जब तुम ऐसा सब बोलते हो ना इंटरव्यू में, तो वो इंटरव्यू समझ जाता है कि यू आर नॉट अ फ्रेशर। तुमने सिर्फ रिपोर्ट नहीं बनाया या तुमने सिर्फ मॉडल्स नहीं बनाए। तो तुम वैल्यूएशन की बात करो या मत करो, वैल्यूएशन सिंपल होता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। तुम कुछ ऐसा कोई भी एनालिस्ट नहीं है जो परफेक्टली वैल्यू कर सके कोई कंपनी को। इट इज जस्ट अवर अजम्पशंस। फाइन, बट गुड, आई अप्रिशिएट ये सब किया, बट ना थिंक ऑन दैट प्रोसेस ऑल्सो कि तुम इतने टाइम से कर क्या रहे हो। ओके, Got it, sir. ओके। हाय तो सर। हाँ तो सर मैंने लाइक मॉडल्स भेजे, आपने देखे क्या? लाइक मुझे सिर्फ रिव्यू चाहिए था कि कुछ बराबर करो, ऊपर नीचे करो, और मुझे डाउट था एक। हाँ, पूछना। मॉडल्स तो बराबर है ना, फॉर्मेटिंग इज राइट, नथिंग मोर टू इट। हाँ सर, और एक डाउट था। मैंने ना लाइक आपने जो शेड्यूल्स बोले थे वही बनाए, जैसे कि ग्रॉस पीपी, अदर, ये सब, और उसको मैंने बैलेंस शीट से लिंक किया। और आपने और एक चीज बोला था कि सबसे नीचे परसेंटेज से लेने का सेल्स का, और उसके बेसिस पे आगे फोरकास्ट करने का। तो शुड आई डू हाँ, दैट, और शुड आई मेक अ मॉडल, शुड आई मेक अ डिफरेंट शीट फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट आइटम्स एंड फोरकास्ट देयर? नहीं, ईच ऑफ द डिफरेंट आइटम इज बेटर ना, एक्चुअल का ब्रेकअप तो है ना। हाँ। एक्चुअल और ना लाइक कैसे बोल रहा था मैं कि ईच ऑफ द डिफरेंट आइटम्स मीनिंग कि लाइक अदर एक्सपेंसेस का एक, अदर इनकम का एक, और वो शीट में मैं फोरकास्ट करूंगा एंड देन आई विल लिंक दैट टू द बैलेंस शीट
compared to जो दोनों आपने बताया था? both are fine, both are fine, whatever you बोथ आर feel it फाइन, is राइट? good, are fine, बिकॉज yes. एक में बहुत देर लगेगा और दूसरा फट से हो जाता है, लाइक 5-10 मिनट में। तो लाइक मैंने अभी आज आपको एचयूएल का भी भेजा एक। Yeah, so it is what you do is पहले तुम मैं की बेसिक सिखाता हूँ ताकि पहले बेसिक से समझो, then you can improvise. Once you are good with basic, you can improvise. या एक शीट सर, में सब गॉट इट। आइटम से लेकर और फिर लिंक करो। जरूर पर सी सर मैं, एट द एंड मॉडल बनाना जरूरी नहीं होता है, एनालिसिस करना जरूरी होता है, ऐसा है। मॉडल्स तो या ऐसा होता गॉट है इट, कि जितना जल्दी बना सके बना लो, ऐसा है। गॉट इट सर। और सर मेरा आज यही हुआ कि आपने जो सुबह बोला था ना, लाइक मुझे 4-5 डिफरेंट न्यूज दिखे, बट सब क्वार्टरली अपडेट थे। सो आई एम सिटिंग ऑन दैट कि लाइक वो करूंगा अभी, क्योंकि मैंने अभी बनाया नहीं है। तो आज जो न्यूज भेजा आपको, इट्स नॉट एन एक्साइटिंग न्यूज, तो लाइक वो ऐसे ऐसा ही है। हाँ देखा मैंने। हाँ। तो लाइक इट्स जस्ट, शुड आई जस्ट प्रेजेंट फॉर लाइक 1 मिनट? मैं फट से बोल दूंगा फाइन, हाँ बिकॉज इट्स ईवी का है नथिंग ना, हाँ इंटरेस्टिंग। फाइन, प्रेजेंट दैट, या ईवी का है। So, hello everyone, good morning. So, the reason for covering this news is that the passenger vehicle segment, specifically in the EV thing, has increased 77% year on year in this calendar year. So, that's why I feel like BYD is also judging if they should enter this market, since it's a growing market for passenger vehicles which are EV. So, BYD is trying to get into the market. So, it is just trying to discuss if it should make an assembly unit in India, because it has a cap for a number 2,500 vehicles, so they can send it. They can only send that much vehicles in India, and it also has great sales. So like their sales increased 88% year on year to 5,500 units, and this is what my article was trying to say, that it's more premium than others compared to Tata Nexon, ZS, and all of those cars. So this is a new market player which can take a lot of share of other players. This was my conclusion, what I wanted to Other players, say. but other players like which players? Other players, specifically Tata Nexon, XZZ of Mahindra. So because those are the cars which are in the range of BYD's Alto 3, and there is this other model. So like both of those are premium. So like BYD has these two models, Seals EVs and Atto 3. So both of those are a little premium, like around 20 to 30 lakh, because it's a big company and because of the import costs also it's increasing. But if they produce it in hand, like in India, their cost will reduce significantly and they can directly compete with big EVs like Tata Nexon and specifically this one, MG ka ZS. फिर I देखिए don't have any sales data for them. I don't have, I'm just disclosing. So I can't say much. चाइना देंगे क्या लोकलाइज करने को इंडिया, आई एम नॉट श्योर। नहीं देंगे सर, सिर्फ ये बढ़ावे के लिए, बट इट्स द बिगेस्ट प्लेयर वो लोग का, लाइक वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेयर है BYD, इसीलिए हाँ थोड़े ये डरे हुए हैं। इसमें तो दे हैव ऑलरेडी, आल्सो और टेकन ऑल्सो ओवर टेस्ला। वियतनाम, वियतनाम बेस्ड V1 इज ऑल्सो एंटरिंग राइट यहाँ पे। सॉरी, इवन अगर को देख देंगे फिर वियतनाम, वो। वियतनामी बेस्ड V1 EV इज ऑल्सो एंटरिंग राइट नाउ, ईवी अपकमिंग या। वी फास्ट ना, विन फास्ट। यस, और वो तो मास सेगमेंट के लिए टारगेट कर रही है। इनिशियली दे आर ट्राइंग विद टैक्सीज एज अ बिजनेस मॉडल, देन दे विल एक्सपांड टू रिटेल। एंड इट्स ईवी गुड, पे लाइक दर्शन, आई आल्सो थिंक कि वो लोग में है पोटेंशियल इफ दे आर V1 में टारगेटिंग यस, मास। यस ट्रू। एंड ऑल्सो द टैक्सी एग्रीगेटर को डिस्टर्ब करे ना, क्योंकि खुद का व्हीकल लॉन्च करके और खुद को सिर्फ ड्राइवर को सैलरी दे रहे हैं, अनलाइक द अदर ओला एंड उबर मॉडल। अरे सी अभी यहाँ पे कोई है तो नहीं प्रेजेंट इसमें, तो क्या बोले। हम्म। या दर्शन, anything यस on सर। your previous? Yeah. So good morning everyone. I'll be presenting the quarter three updates for the TVS Motors. So TVS Motors delivered its highest ever quarter three performance with revenue up 37% YOY to 124 billion and EBITDA up 51% YOY to 16.3 billion and margins at 13.1% and PBT rising to 57% YOY to 13.2 billion. So if I break down the sales segment, we did the volume come from mostly domestic two-wheeler increased 21% YOY, outperforming the industry growth. International sales stood at 35% YOY, and electric two-wheelers accounted for 40% YOY growth with 106,000 units sold or 1 lakh units sold, and three-wheelers almost doubled with 60,000 units at 106%. Then scooters now form around like 40% of the two-wheeler markets, followed by led by motorcycles. Then coming to the key highlights for the quarter three financial year 26. So the company now serves around 2.3 crore customers, adding 41 lakh new customers in the past 9 months. So the order book was around 29,000 crores, which was up 9% YOY.
mainly due to future revenue and rising institutional share. So what is the forward-looking out statement for the new product, that is the Norton? So Norton was one of the oldest British motorcycle which TVS acquired in 2020 and invested heavily. So they want to focus on the luxury and the super premium segment for the motorcycle because they currently cater mass audience. So with the new products lineup for the TVS Norton, products like Manix, Manar, Atlas GT will be positioning and competing with versus like Kawasaki, Tiger, mainly in the 550 and 600 above CCs. And then coming to next update, how are they managing the raw material cost? So they acknowledge that due to rising commodity price impact, like increasing prices like aluminum, copper, zinc, etc., there was approximately 2 to 2.3% impact on them. And currently, then coming to next, just a quick update on how do they manage their capacity. So the company maintains around 21 to 30 days of dealer stock to ensure fresh products reaches investors, and capacity increases typically takes 2 to 3 months. Then coming to what exactly is the TVS's EV strategy. So if I have to focus on, I will bifurcate into two segments. The first one is the iQube and the Orbiter. So iQube targets the core mass market electrical scooters, but on the other side, Orbiter is a differentiated one with a lower price urban EV offering. And also they have partnered with Singapore-based Ion Mobility to focus on strategic collaboration on design, integrated patents, and other related stuff. Then moving on to how the capital expenditure has been allocated. So the capital expenditure has been around 1,700 crores due to the capacity expansion, and investments were around 2,900 crores. And then 2,900 crores, which mostly are allocated for mostly, as I mentioned, the Ion project and the Norton, the new product launch up, and the international expansion across new geography, Dubai operations. And then TVS has captured around like PLI benefit schemes, approximately 70 bips, which were eligible for revenue, which indeed supported the margins. And then coming on to what exactly with the conclusion, what was the management's future outlook? So management expects quarter four growth around at 15% and financial 26 growth around 9%, mostly driven by improving rural and urban demand and infrastructure development, premiumization journey, including Norton expansion and EV momentum. And below are the financials and the key ratios for the company. That's also. दर्शन गुड वन आई थिंक अप्रिशिएटेड और अच्छा बनाया तुमने। अच्छा अभी इसमें क्या हो रहा है कि काफी सारे ना यहाँ पे पॉइंटर्स दिखते हैं, ठीक। आइडियली पॉइंटर्स सिर्फ एक ही लाइन में आते हैं एट द एंड, जैसे तुमने इसका देखा होगा आयुषी का कि लास्ट ही अदर हाइलाइट्स होते हैं। Okay. अभी इसमें ना एक वे होता है टू प्रेजेंट डेट, ये तुमने पहले तो इन द रिपोर्ट्स चार्ट्स सेकंड पेज पे आते हैं, सेकंड या थर्ड पेज से चालू होते हैं। ओके, फर्स्ट पेज पे चार्ट्स नहीं होते, फर्स्ट पेज पे जस्ट अबाउट राइटिंग, थोड़ा बहुत हाईलाइट्स, बिकॉज मुझे सिर्फ तुमको हाईलाइट्स देना है। तो जैसे मैंने वो किया था ना कॉन्फ्रेंस, हमने अभी कल ही लास्ट वीकेंड ही किया था कॉन्फ्रेंस कॉल, चालू कैसे करते हैं, यस यस, टॉक अबाउट रेवेन्यू ग्रोथ क्या हुआ है, अभी 37% क्यों हुआ है, क्या रीजंस की वजह से, EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन क्यों हुआ है, क्या रीजन की वजह से, पैट क्यों हुआ है। ओके, तो ये तुम्हारा पहला हाफ पेज उस पे जाता है, समरी पे, रिजल्ट समरी पे। उसके ठीक है। बाद यू स्टार्ट विद कॉन्फ्रेंस कॉल हाइलाइट्स, या फिर तुमको स्पेसिफिकली कुछ बताना है तो। अच्छा, Okay. कॉन्फ्रेंस कॉल हाइलाइट में भी सी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू व्हीलर डोमेस्टिक, तो जितने भी टू व्हीलर है, टू व्हीलर डोमेस्टिक में आइस भी आते हैं, ईवीज भी आते हैं, करेक्ट। तो वो तुम एक साथ इसको क्लब कर सकते हो, ठीक है। या फिर चलो ईवी का अलग है तो टू व्हीलर लिखो, ईवी का अलग से लिखो, थ्री व्हीलर्स अलग से लिखो, इंटरनेशनल मार्केट अलग से लिखो। तो जैसे तुमने बोला कि टू व्हीलर्स में अभी ये रहो, दिस इज टोटल कस्टमर बेस, कस्टमर बुकिंग साइज, ये सब इंडस्ट्री वाइड डेटा है या कंपनी वाइड डेटा है, Yeah. ठीक है। तो ये टू व्हीलर थ्री व्हीलर के साथ नहीं आएगा, ये अलग से आएगा, तो ये एंड में ही आएगा। Okay. भी नॉर्टन मोटरसाइकिल है तो ये टू व्हीलर का पार्ट है, तो तुम ये भी बोल सकते हैं कि सर टू व्हीलर मोटरसाइकिल, उसमें टीवीएस में स्प्लिट दिया है, टू व्हीलर कितना है, थ्री व्हीलर कितना है, तुमने लिखा है यहाँ पे ओवरऑल। तो मोटरसाइकिल्स कंट्रीब्यूट लेट्स से 30% ऑफ द सेल्स, तो उसमें से क्या हो रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग इन द मोटरसाइकिल्स कि न्यू नॉर्टन लाइन अप हो रहा है, तो क्या फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट हो गया कि मोटरसाइकिल्स में क्या हो रहा है, सुपर प्रीमियम सेगमेंट में जा रहा है। Yeah. अच्छा, ये इंडस्ट्री को ये वापस लास्ट में आएगा ठीक कि है। जब तुम्हारा सब मेरे को मुझे सब बता के हो गया कि सर टू व्हीलर में अलग क्या हो रहा है, या डेटा पॉइंट्स कि मोटरसाइकिल कितने से हुआ है, स्कूटर से कितने हुआ है, क्यों हुआ है, एंड आगे क्या कर रहे हैं, यही होता है इंटरनल मार्केट में क्या हुआ है, आगे क्या कर रहे हैं, एंड रीजंस फॉर दैट। सेम अभी इलेक्ट्रिक मार्केट में वापस टू व्हीलर ग्रो इंडस्ट्री, तो तुम इलेक्ट्रिक जब बात है तो इलेक्ट्रिक में डाल सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिक तुम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हो।
ठीक है सर। टू व्हीलर परफॉर्मेंस ग्रू 40% फाइन, तो क्या हो रहा है अभी इलेक्ट्रिक में? सर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री इतने से ग्रो हुआ है, ऐसा हुआ है। अंडरस्टूड। इंटरनल मार्केट जब तुम बात करते हो डेटा पॉइंट्स है, तो डेटा पॉइंट्स इंटरनल मार्केट्स की बात करो। ठीक है। तो ये होता है कॉन्फ्रेंस कॉल की। तो तुमने सेल्स की बात की, फिर कमोडिटी पे आए, तुम कॉस्ट पे आए। कमोडिटी में क्या हुआ है? या अब देखो स्कूटर सेगमेंट तुमने यहाँ पे लिखा ही है, स्कूटर, तो वो स्कूटर ऊपर ही डाल दो ना। तो जब मुझे प्रेजेंट करते कोई चीज तो पूरा साथ ही कर दो कि सर मैं भी डोमेस्टिक की बात करूँ तो डोमेस्टिक में क्या क्या हुआ है। डोमेस्टिक में दो आता है, टू व्हीलर्स और मोटरसाइकिल, सॉरी मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स। मोटरसाइकिल्स में नॉट प्रीमियमनेस हो रहा है, स्कूटर्स में ये हो रहा है, ठीक है सर, समझ गया। कैटेगरी शेयर बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि तुम अभी जो बता रहे हो वो बहुत इधर उधर है। मतलब तुम अभी टू व्हीलर्स फिर थ्री व्हीलर्स पे आ रहे हो, ईवी पे आ रहे हो, फिर अचानक से वापस एक्सपोर्ट्स पे जा रहे हो, फिर अचानक से टू हम्म व्हीलर पे आ रहे हो। तो समझ उसमें गया। क्या हो रहा है, जो सुनने वाला होता है ना उसका ध्यान नहीं होता है। हम्म या फिर कैसे होता है, आई विल टेल यू व्हाट इज द माइंडसेट। मैं ना लेट्स से मेरे पास हीरो भी है, ठीक है। हम्म भाई मुझे आता है हीरो में तो ना थ्री व्हीलर्स तो है नहीं, ठीक है, ना ईवीज है। हम्म तो मेरा ध्यान ना तुम पे सिर्फ टू व्हीलर पे क्या बात करो ना उस पे होता है। अंडरस्टूड। ठीक है? ऐसा होता है। दिस इज हाउ एन माइंड सेट ऑफ एन एनालिस्ट इज, या फिर माइंड सेट ऑफ अ फंड मैनेजर इज। हम्म कि मुझे पता है थ्री व्हीलर में तो कोई इंडस्ट कोई है ही नहीं, कंपनी बजाज टॉप प्लेयर है, यस। ठीक है। एक हीरो का एक्सपोर्ट है ही नहीं, एंड बजाज का सबसे ज्यादा है। तो टीवीएस वैसे भी एक्सपोर्ट में कुछ काम का है नहीं। तो मेरा टीवीएस पे फोकस कहाँ पे होगा? तो टू टू व्हीलर में क्या कर व्हीलर्स। रहा है? यस। टू व्हीलर में भी क्या, टू व्हीलर में मोटरसाइकिल, और मुझे पता है स्कूटर्स में है वो। यस। तो मेरा तुम ध्यान ना स्कूटर्स पे ही होता है। कि अभी भी मैं सुन रहा था ना, जैसे मेरा हाँ। ध्यान किधर और ही है। पर जब तुम स्कूटर्स किया तो मेरा क्लिक होता है, अरे हाँ तुम क्या बोल रहे हो स्कूटर्स के बारे में, ऐसा है। बिकॉज अंडरस्टूड। बाकी सब तो नॉइज ही होता है। कैपिटल लोकेशन क्या है, ये सब तो डेटा पॉइंट मैं भी ढूंढ सकता हूँ ना, ऐसा है। देयर इज नथिंग श्योर। मोर टू। तो मुझे ऐसा है कि तुम एक के बारे में क्या बोल रहे हो, फिर से सब जाओगे ना। इतना अच्छा तुमने लिखा, यू हैव रिटन इट वेरी वेल। मतलब ये दो तीन पेज का आराम से हो सकता है, तो पूरा अंडरस्टूड। समझ में आएगा कि वो पोर्टफोलियो में क्या कौन से है अभी ना। अपाची है, रॉइन है, फिर जुपिटर तुमको पता है स्कूटर्स है, जुपिटर आईक्यूब, तो आईक्यूब ईवी है, तो ईवी या में लिखो ना, साथ में क्यों लिख रहे हो? या फिर तुम एक कंक्लूजन में लिख सकते हो कि ये सब उसका पोर्टफोलियो हो रहा है। ठीक है सर, समझ गया। गॉट इट? लिखा मस्त है, इट इज वेरी गुड। बस कंबाइन करना है, प्रॉपरली बस स्ट्रक्चर करना कंबाइन है। करना तुमको एक वे में। या रेशियोज वेशियोज ठीक, ये सब नहीं लिखते। रेशियोज करंट रेशियो ठीक है, मतलब अभी के लिए ठीक है। वो बट रिपोर्ट यू कर डोंट दे, राइट इट बट इन अ टीवीएस रिपोर्ट, यूजुअल। या जस्ट राइट रेवेन्यू। अभी इसके लिए मॉडल्स होते हैं पहले, तो यू हैव टू मेक वो सब नंबर्स पंच करने होते हैं तुमको टीवीएस के ओवरऑल। हम्म तो उस पर तुम फिर पूरा पीएनएल दिखाते हो, फिर फोरकास्टिंग होता है, तो यूजुअली क्वार्टर रिजल्ट में वो सब आता है एंड में। ठीक है। या फिर हिस्टोरिकल नंबर्स, लास्ट 4-5 क्वार्टर में क्या हुआ है, ऐसा टाइप्स, क्वार्टरली। ओके सर, समझ गया। वो ठीक है, चार्ट्स तो ठीक है, चार्ट्स आर फाइन। हाँ ये मैनेज, ये कैसे लिखा, मैनेजमेंट गाइडेंस, तो ये सब एंड में ही आता है। मैनेजमेंट गाइडेंस, फिर तुम्हारा की इन्वेस्टमेंट एरियाज, क्योंकि इसका कोई रिलेशन है ही नहीं तुम्हारे इससे। टीवीएस हम्म क्रेडिट 200 करोड़, टीवीएस क्रेडिट में है ही, मतलब मेन पोर्टफोलियो उसका है नहीं क्रेडिट, उसका गाड़ी है। या ये भी अब देखो नॉर्टन का 60-70 करोड़ प्री लॉन्च एक्टिविटीज हो रहा है। ठीक है, ये सब तो अंडरस्टूड। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्स और समथिंग, कॉस्ट का पार्ट हो गया ये। तो ये कॉस्ट का जब या तुम बोलते कमोडिटी इम्पैक्ट, तो उसमें ये भी आ जाएगा, कैपिटल एलोकेशन, खर्चे की जब बात करते हैं, सब तुम्हारे खर्चे हो गए। अंडरस्टूड। तो एक ब्रॉडर पे सेगमेंट्स, लाइक एक अगर सेल्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें ही ब्रॉडर डिवाइड डिवाइड कर दो, अगेन कॉस्ट की बात करो तो वहां पर ही डिवाइड कर दो, एंड एक्सेट्रा राइट। राइट राइट, तो उसके लिए हम वो करते हैं ना, कंपनी प्रोफाइल इसके लिए करते हैं, जस्ट टू हम्म अंडरस्टैंड कि जब हम कोई अपडेट देंगे तो रैंडमली अपडेट नहीं देना होता। अंडरस्टूड। ओके, क्योंकि मैंने बिकॉज इसको ये तुम, डिवाइड, सॉरी मैंने सॉरी, इसको डिवाइड किया था बेस्ड ऑन की हाइलाइट्स एंड कॉन्फ्रेंस हाइलाइट्स, तो उसकी वजह से वो जम्बल्ड हुआ है, बट आई गॉट योर नंबर, पॉइंट। हाँ तो वो करेक्ट ना, इट इज, तो वही होगा कि अभी क्या हो रहा है, ये जब ना मैं जब करने का ना 10 साल पहले, 10 साल पहले तुम ये करते ना तो ठीक था। हम्म बट अभी क्या हो रहा है, अभी एआई भी मुझे ही दे देगा सब कुछ, ट्रू। और और ज्यादा स्ट्रक्चर वे में। तो मुझे चाहिए कि तुमको क्या समझ रहा है इसमें। एंड एट द एंड तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ये 4-5 चीजें थे जो मुझे समझ में नहीं आई। कि फॉरवर्ड लुकिंग में अभी तुम मैं बोलो कि एक्सपोर्ट्स में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स की बात की है क्या, इसमें तुमको एनालिसिस करके देना है कि सर इसको कॉम्पिटिशन आ सकता है आगे जाके, या इसको कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। टू व्हीलर्स हम्म में नए नए क्या क्या लॉन्चेस हो रहे हैं बाकी के कॉम्पिटिटर्स के, तो वो सब तुम तुम्हारे एनालिसिस में डाल सकते हो। तो ये जब तुम 3-4 कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ोगे, टीवीएस का, हीरो का, आइशर का, तुमको समझ में आएगा इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। समझ गया सर। ऐसा ऐसा। सर मैंने ही बनाया है, कैन आई हाँ प्रेजेंट? यश,
या Cool. मैं आपको अपडेट करके रिवाइज भेजता हूँ सर. हाँ यस भेजना मुझे. Yeah. ओके सर. या क्या आशिका? आशिका तुम आते ओके क्यों नहीं रोज रोज कॉल पे? सिर्फ सर, रिजल्ट मैं के टाइम अपडेट कंटिन्यू करते हो. क्या हुआ? सर, मैं कंटिन्यू करूंगी मॉर्निंग कॉल. नहीं अभी मैं बता ना इसको क्या बोला मैंने आयुषी को कि इफ यस यू आर सर, ठीक है. कंटिन्यूस तभी ऑन दैट द टाइम ओनली ये रिजल्ट अपडेट विल मेक अ सेंस. ओके. क्योंकि आई विल आस्क यू फॉलो अप क्वेश्चंस ऑन दिस. तुमको यस पता सर. नहीं है इसका मतलब तुम सिर्फ अपडेट कर रहे हो, तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो. ये भी बात हुई कि तो ओके सर. एनालिसिस शुड गो विद सॉरी अपडेशन शुड गो विद एनालिसिस. ऐसा है. Rishabh ओके sir. सर. हाँ यस. Yeah, Vedant हाँ here. So I have a quick हाँ news. Maybe I can present it. हाँ ओके फाइन या ओके वन यशी का एक सेकंड लेट हिम प्रेजेंट. ओके सर. हाँ हाँ बता. I'll share my screen. Okay. Okay. So hi everyone, myself Vedant. So this is my first news that I'm going to present today. So the news is regarding the telecom sector. The Vodafone Idea plans to, put a capex of 45,000 crore into next 3 years as its AGR, uh, annual gross revenue, accumulated gross revenue, sorry, fog lifts uh, from the government of India. So Vodafone Idea has announced that it will be investing 45,000 crores in upcoming year. Uh, a 10-year extension has been granted from government of India that it has a repayment dues, allowing them to pay that AGR into between financial year 36 and 41, between the year financial year 36 and 41. So where this 45,000 would be spent, this money would be going into 4G coverage, 5G rollout in the key circles, and improving their network quality and stopping their subscriber losses. And the company is also aiming to double their revenue growth. That is, they're planning, they have forecasted that they'll be achieving double-digit revenue growth, 3x increase in their EBITDA, and start adding new subscribers soon. And the impact of this particular news can be on the P&L statement. The depreciation might rise because there is a huge capex involvement, but the EBITDA is also expected to improve, and the balance sheet's asset will be improving while the equity has been diluted. Earlier it was like 30%, as we can see, and now the majority, almost 49% of the company, is owned by the government of India. So we need to track this particular stock for upcoming quarters, and then we can do an assumption and make our decision for buy or sell recommendation. वेदांत विल Yeah, नाउ लेट बी मोर प्रैक्टिकल. ठीक है न्यूज़ yeah. लिया अप्रिशिएटेड तुमने पढ़ा है नो डाउट लिखना. अभी ना इफ आई आस्क यू वेदांत कैन यू पुट योर एंटायर सेविंग्स इनटू वोडाफोन? No, नहीं. no. अच्छा उसकी कॉम्प्लीट व्हाई नो? Because the company is loss making as of now. It hasn't shown a एग्जैक्टली. significant आर यू pattern ट्रैकिंग द कंपनी या of फिर इज turnaround इट pattern. वोडाफोन का कॉम्पिटिटर कौन है? Geo and BS, this Airtel. जियो Yeah, एंड एयरटेल. करेक्ट. सो कैन आई yeah. से इट इज टाइप ओलिगोपोली मार्केट? Yes, सो नाउ क्वेश्चन कम्स कि इस पे एनालिसिस करके क्या होगा right. एट द एंड. Hmm. मतलब तुम अगर सी डू दिस एवरीथिंग फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव. Okay. मैंने जो स्टॉक बोले है क्या है अभी जैसे मैंने आयुषी को बोला कि हम ऑटोमोबाइल क्यों ट्रैक करते हैं बिकॉज जब भी कॉन्फ्रेंस कॉल आता है वी नो कि हो क्या रहा है कंपनी में. एफएमजीजी क्यों ट्रैक करते हैं बिकॉज वी आर लुकिंग एट द सेगमेंट्स. ये सेगमेंट को अगर तुम ट्रैक करोगे ना तो तुम ही खुद बोल रहे हो कि सर मैं स्टॉक नहीं ले पाऊंगा. देन तुम इंटरव्यू को कैसे कन्विंस कर पाओगे कि दिस इज अ बाय स्टॉक? तुम बोल रहे हो एबिटा मार्जिन कम होगा ये होगा बट वी नो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन दिस कंपनी. गॉट इट. सो ऐसे न्यूज पढ़ने का Hmm. तुम अपडेट खुद के जनरल नॉलेज के लिए पढ़ो बट देन यूज क्या है इसका? इंटरव्यू में तो कुछ काम में नहीं आएगा ये. Okay. गॉट इट. सो थिंक
फ्रॉम एन इंटरव्यू हाँ परस्पेक्टिव कि यस अगर हाँ ये सब, क्योंकि क्या होता है भाई ऐसे बीएससी अंडरस्टूड 100 में हमेशा बोलता हूं ना कि बीएससी हाँ 100 फोकस करो, बिकॉज दिस आर सच काइंड ऑफ स्टॉक्स वेर यू कैन सेल योर हाउस एंड कीप द मनी, स्टिल उसको कुछ होने वाला ही नहीं, वो कंपनी डूबेगा नहीं। जैसे रिलायंस, इफ आई टेल यू टुमारो हम्म रिलायंस में हो, ठीक है यू कैन सोच भी सकते हो एक बार कि पता रिलायंस जीरो नहीं होगा, हम्म और मे भी मारुति हो गया, ठीक है अभी रिलायंस पे हम रिसर्च नहीं करते बिकॉज बहुत बड़ा कंपनी, डोंट अंडरस्टैंड द कंपनी, और जो कंपनी से हम अंडरस्टैंड करते हैं वी नो वी कैन पुट अ लार्ज चंक ऑफ मनी। सो दिस इज माई थॉट प्रोसेस विच हेल्प मी बी सक्सेसफुल इन द लाइफ। सी हम स्मॉल कैप की बात करते हैं, मल्टी बैगर उधर से ही आता है, स्मॉल हम्म कैप या फिर मिड कैप से, बट इट कैन नॉट बी योर पोर्टफोलियो। मेरा आज भी 60% ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू लार्ज कैप, एंड मेरे ज्यादा पैसे लार्ज कैप से बने, जस्ट ओके अबाउट द टाइमिंग कि कब टाइमिंग पे इन्वेस्ट करना है, एंड वो टाइमिंग को मुझे 8 साल लग गए वो टाइमिंग लाने के लिए। ओके, बट मेरा रिसर्च कंटिन्यूस उसी पे था। स्मॉल कैप एक हाथ दो चल गए मेरे, हम्म बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं आज भी स्मॉल कैप नहीं ले सकता स्टॉक, बिकॉज उस पर डेटा पॉइंट्स नहीं है इतने। मतलब अगर मैं आज एनालिस्ट नहीं हूँ तो स्मॉल हम्म कैप और मिड कैप पर रिसर्च करना इज लाइक डिगिंग योर ओन ग्रेव, मतलब पता नहीं कल क्या होगा। करेक्ट दैट इज लाइक दैट। तो ये सब वो स्टॉक्स है। गॉट इट सो इंटरव्यू में सो गए भी ना तो वो अननेसेसरीली ही विल ग्रिल यू ऑन द स्टॉक, अननेसेसरीली। हम्म ऐसा ऐसा होता है। so news reading should be with the perspective of like actually investing in that particular sector When or you stock investing, हाँ कि तुम खुद yeah इन्वेस्ट कर सकते हैं कि स्टॉक, डू यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, हम्म मतलब ये है भी क्या इतना कैपेबल टू इन्वेस्ट, ऐसा। न्यूज understood रीडिंग वही प्रश्न, मतलब तुम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हो, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ओके, जैसे आज मैं तुमको बोलूं मारुति में इन्वेस्ट करो, करोगे ना? 100 सवाल तो नहीं पूछा कि सर कंपनी खराब है कि नहीं, उसका EBITDA है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, दिख रहा है ना रास्ते पे गाड़ियां दिख रही है, ग्रो हो रहा है, एटलीस्ट यू कैन गिव अ थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इट, राइट? तो इसके लिए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंपनी, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स। ये सब कंपनीज अवॉइड करो, छोटे मोटे कंपनीज। अपडेट है ठीक है फाइन, मतलब पढ़ो, तो मैं नहीं पढ़ रहा नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए क्या हो रहा है कंपनी पता होना चाहिए, but you never think of buying a multi-bagger. Others also, when you read a newspaper, the perspective should be in, do you understand the business and are you capable of investing in it? मतलब तुम्हारा अगर ये बिजनेस होगा, डू यू थिंक इट विल ग्रो? एंड उसके लिए वो मार्केट ट्रैकर बनाते हैं कि रोज देखो प्राइसिंग में हो क्या रहा है, रोज के रोज। क्या? got it thank you so much या Sir, Ankita हाँ here. अंकिता, Yeah, sir, I have sent you the December report and वो जो कॉन कॉल्स वो जो आपने बोला वो आज हम उसके ऊपर काम करके भेज देंगे आपको। सो दिसंबर रिपोर्ट एक बार ठीक है क्या, मतलब कैन आई प्रेजेंट टू मैम? दिसंबर रिपोर्ट कौन सा किया तुमने? आई थिंक सैमी होटल किया ना लास्ट। नहीं नहीं, होटल्स पे नहीं, वो मेरा ऑटोमोबाइल का था। तो आपने बोला था दिसंबर का रिपोर्ट बना के लाइक लास्ट वीकेंड टू लाइक प्रेजेंट टू मैम, सो आई प्रेजेंटेड नहीं, रिपोर्ट नहीं। कब है? रिपोर्ट दिसंबर के रिपोर्ट कहाँ पे? आईटीसी है लास्ट, लेमेंट्री है, ओके, ईमेज है, मुझे नहीं आया दिसंबर का रिपोर्ट तुम्हारा। एक्चुअली मैंने भेज ही दिया था आपको। ठीक है, हम फिर से एक बार भेज दे रहे हैं। तो लाइक आई कैन लाइक प्रेजेंट प्रेजेंट, इट और यू विल फर्स्ट चेक हाँ इट। हाँ हाँ प्रेजेंट करो ना पहले, हाँ। अच्छा सॉरी अंकिता, आई एम सो सॉरी, मैं दूसरा देख और एक अंकिता थी, आई एम सो सॉरी। हाँ प्रेजेंट करो ना मैम को प्रेजेंट करो, ये वाला ना। ओके हाँ ओके। मैंने देखा ये, सॉरी हाँ मैंने देखा ये, गुड है, मतलब अच्छा है। प्रेजेंट करो ना, फिर तुम यहाँ पे प्रेजेंट करो, ठीक है? क्योंकि अभी वापस फर्स्ट को नए नंबर्स आएंगे नेक्स्ट संडे को, तो इसी में तुमको सिर्फ अपडेट करना है, दैट्स इट। बट ये पहले प्रेजेंट कर दो मैम को। ओके ओके श्योर। ओके फाइन, देन आई विल। ओके सर। Hello, sir. Bharat Kumar here. क्या भरत? I have shared you the company profile of Charlotte Total, sir. Can you please check that if the formatting is correct or not? ओके, विल चेक। व्हेन यू सेंड टुडे? Rishabh sir ओके, I had one question या जा क्या वेदांत? so actually when we are doing analysis for these mature companies, let's say HUL or DMart, let's say Reliance, they have kind of a stable revenue. So करेक्ट।
even if we are doing the forecasting, like we'll be taking the historical years and forecasting based upon that CAGR. So Mhm. is it worth it to, analyze those kind of companies, or the companies which are having like negative working capital, like positive working Like, capital, huge capex, and their revenues growth is really high? The initial, like young growth companies basically. see, if I give you a set of 10 companies, Mm-hmm. उसमें से तुम क्या चूज करोगे? HUL है, मैरिको है, डाबर है, all are stable companies. Yeah. Because as per my risk appetite, I cannot invest in a growth company. अगर ये क्राइटेरिया है तो तुम क्या करोगे? Then the rule itself says we have to invest in stable companies. हाँ, स्टेबल कंपनी नहीं, स्टेबल कंपनीज है, बट कौन सी? HUL भी है, डाबर भी है, मैरिको भी है, विच वन? मुझे एक में डालना है. सो योर पर्पज इज नॉट टू गेट अ मल्टीबैगर, योर पर्पज इज टू आउट परफॉर्म द मार्केट. मतलब निफ्टी अगर 10% गिरा है, तुम्हारा स्टॉक 8% भी गिरा है, तो यू आर आउट परफॉर्म. ऐसा. Okay. Okay, it is never about making money in the market, because see, from a normal perspective, वो तो मेजोरिटी ऑफ द पैसा लार्ज कैप में बन है ना, सब इन्वेस्टर्स का. करेक्ट. लार्ज पेंशन फंड्स, लार्ज म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्टेड है ना. Correct. आर दे इन्वेस्ट इनटू शॉर्ट, आर दे इन्वेस्टेड इनटू स्मॉल कैप्स? स्मॉल कैप्स में तो है ही नहीं इन्वेस्टमेंट किसी का. म्यूचुअल फंड का तो होता ही नहीं है. इट्स वेरी रेयर. देख लेना एक बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लार्ज कैप का AUM कितना है और स्मॉल कैप का कितना है. Okay. बिकॉज लार्ज फंड्स ऑलवेज इन्वेस्ट इन लार्ज कैप. मतलब लार्ज कैप फंड में ही. मतलब मैं जब एनालिस्ट था तो मेरे क्लाइंट SBI था, SBI बैंक का ट्रेजरी डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज, दे डोंट गो बिलो 250, BSE 250, टॉप 250 होता है. फिर नीचे कितना भी मल्टीबैगर क्यों ना हो, अगर जाएंगे तो एक हाथ दो होते हैं स्टॉक्स उनके पास. सो योर पर्पज इज टू एनालाइज द इंडस्ट्री, बिकॉज see when you gain experience, that is the only time you can talk about mid and small cap, बिकॉज उसके डेटा पॉइंट्स इतने अवेलेबल नहीं होते. तुम बोलेगे भी सर ये स्टॉक मैंने इन्वेस्ट किया था, 10x हो गया, 5x हो गया. सी इफ दैट इज द केस, देन तुम जॉब क्यों कर रहे हो? ऐसा होता. तो हम जब Understood. एनालिसिस, आई वाज इन द सेल साइड ना, तो हम लोग का सुनने का नहीं वो. इट इज जस्ट कि मुझे पता इंडस्ट्री में हुआ क्या. आई विल मेक माई ओन एनालिसिस, तुम मुझे मत बताओ. तुम तुम्हारा दिमाग से सिर्फ मुझे बताओ हुआ क्या है इंडस्ट्री में. मुझे डेटा पॉइंट्स दो, बिकॉज ये सब करने को मुझे टाइम नहीं. जैसे एग्जाम्पल, कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने को मुझे टाइम नहीं है, तो मुझे बता कॉन्फ्रेंस कॉल में हुआ क्या है. Okay. ओके. ऐसा होता है, ये रिसर्च होता है, पर्सपेक्टिव. इट इज नेवर अबाउट मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट. इट इज नेवर अबाउट सेइंग कि सर मल्टी बैगर मैंने ढूंढा है. वो तुम तुम्हारे लिए ढूंढो. ऐसा होता है. एंड मल्टी बैगर ढूंढना भी इतना, यू शुड बी सो डैम कॉन्फिडेंट कि तुम तुम्हारा घर बेच के डाल सकते हो क्या स्टॉक. आर यू दैट कॉन्फिडेंट? एंड सोचो वो कॉन्फिडेंस होने का तुमको कितना टाइम, साल लगेगा. मुझे खुद 8-10 साल लगे. टिल आई हैव नॉट फाउंड अ मल्टी बैगर. मैंने मारुति में इन्वेस्ट किया था, इट लाइक दैट. एंड वो 8 साल बाद चला. तब तक मैं क्या कर रहा था? तब तक मैं क्या कर रहा था? ट्विटर में क्या कर रहा था मैं तब तक? Holding it patiently. अपडेटिंग इट ऑन अ डेली बेसिस कि सच में होल्ड वर्थ है या बेचना चाहिए, Hmm. या ऐड करना चाहिए गिरा है तो. यही कर रहा था मैं. एंड इट इज नॉट Okay. ओनली मारुति, टाटा मोटर्स भी था, महिंद्रा भी था. ऐसा ना हो कि मारुति नहीं चल रहा है तो मारुति बेच के महिंद्रा लो, या मारुति बेच के कोई अलग सेक्टर में चले जाओ. ऐसा है. यशिका. Okay, sir. An update about our TVS Motors Q3 2026 result. TVS Motors grew revenue 34% Y-on-Y, driven by robust volume expansion across key segments. The motorcycle grew 31%, scooters 25%, and three-wheelers 107%, supported by GST rate cuts, festive season demands, retail financing, good monsoon, improving infrastructure, market penetrations, and RBI rate cuts. EBITDA rose 33% to 23 billion. EBITDA margin increased 40 basis point to 15.4%, led to decrease in direct cost, and which is driven by higher volume increase by company, and the employee expense also decreased 100 basis point to 11 billion.
Adjusted PAT rose 46% to 9 billion and PAT margin expanding 50 basis point to 6% and reported PAT margin improving 90 basis point to 6.4%, aided by an exceptional item of 500 million related to labor codes. And the totals, and now talking about total segment volume, grow an excellent growth, 27% to 1.5 million units, driven by strong demand on domestic two-wheeler market, which is rose 23% and the export rose to 35%. Now, the in domestic market, urban market rose 21% and the rural market rose 19%, supported by favorable rainfall and improving infrastructure. Now, total international revenue increased 23% year on year to 29 billion, driven by continued growth in Africa and sustained demand across the Asia region, particularly Sri Lanka, and which shows a robust momentum. And while Europe demand remained weak. And the company expands its motorcycle portfolio with 4 premium and 4 super premium models targeting international market, especially in Europe countries. It strengthened its premium motorcycles. Company launched the motorcycles named Apache RR310, Apache RTR 310, and Ronin 225, Apache RTR 200. Mainly aimed at enhancing its presence in the higher displacement and lifestyle segments. At EICMA 2025, Norton announced its global comeback, unveiling 4 super premium motorcycles, MANX, MANX Rs, Atlas, and Atlas GT, along with 6 new ICI, which is petrol and electric models, AR-based HUD helmet, which is very advanced helmets, and especially plans to in Europe countries. The company forward-looking statement, the company expects 50% or higher growth in FY27 compared to the industry expected growth only 10 to 10%. In Q4, the company also expects a strong growth supported by GST rate cuts and favorable rainfalls. The company remains positive about the growth in the upcoming years, supported by increasing market share, deeper market penetration, and strong momentum in both domestic and international market. That's it, sir. Okay, fine, Narek. Good one. थोड़ा fast हो गया, but fine. Time. Expanding into premium portfolio. Okay, 4. That's okay. You can frame this थोड़ा ना इसको एक इसमें डाल सकते जैसे मैंने अभी बोला ना to put it into अगर 2 motorcycles की बात करो तो motorcycles की बात करो. प्रीमियम में फिर क्या कर रहे हैं ना motorcycles are coming into premium. फिर डोमेस्टिक की बात करें डोमेस्टिक सो डिवाइड दिस इनटू हाउ वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक इंटरनेशनल. तो डोमेस्टिक में क्या आता है 2 व्हीलर मोटरसाइकिल स्कूटर्स आता है. तो मोटरसाइकिल स्कूटर्स में क्या हो रहा है इंटरनेशनल में क्या हो रहा है. सो डिफाइन दैट मतलब अलग अलग करो तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है. ओके स्ट्रेंथन इट्स प्रीमियम पोर्टफोलियो विल लॉन्च ऑफ 4 प्रीमियम. मुझे पता है मोटरसाइकिल्स में लॉन्च हो रहा है तो राइट इन द मोटरसाइकिल्स पार्ट ना ऐसा है. ओके मतलब सर, थोड़ा एक्चुअली ओके ये सर एक्चुअली क्या हो बोला? चुका है, उसके बारे में बात था एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में इसको ऐसे सेपरेट कर दिया था. नहीं तो वही है सेपरेट उन्होंने यस किया. हमको मिक्स करना ना कि तुमको क्या बताना है मुझे कि सर या जैसे हम टीवीएस पता है टीवीएस इज इनटू 2 पार्ट्स. एक डोमेस्टिक इंटरनेशनल फिर डोमेस्टिक यस में मोटरसाइकिल स्कूटर्स. ठीक है तो मैं बराबर बता सेगमेंट ग्रुप. तो डोमेस्टिक में स्कूटर है तो डोमेस्टिक जब स्ट्रेंथन हुआ डोमेस्टिक मार्केट अर्बन डिमांड रोज पर 21% इंक्रीज सपोर्ट बाय फेवरेबल रेनफॉल इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है डोमेस्टिक मार्केट में क्या आता है मोटरसाइकिल्स आता है. ठीक है ओके सर तो मोटरसाइकिल्स में ग्रोथ ठीक है 25% से ग्रो हुआ इंक्लूडिंग. ठीक है ओके ईवी मोपेड. ठीक है तुमको ये पता. फिर मोटरसाइकिल्स की बात करो ना मोटरसाइकिल्स में क्या हो रहा है. तो ओके मोटरसाइकिल सर में भी ये स्ट्रेंथ कर रहा है स्ट्रेंथिंग. फिर स्कूटर्स में क्या कर रहा है. स्कूटर्स के बारे में लिखा है क्या स्कूटर्स के बारे में कुछ नहीं नहीं लिखा सर, है. स्कूटर्स के बारे में नहीं लिखा है. 6 तो न्यू तुम्हारा मॉडल्स लॉन्च. हाँ तो तुम्हारा अभी ये शुड योर एनालिसिस कि स्कूटर्स में क्या हो रहा है कि स्कूटर्स का ओके डेटा है ना. स्कूटर का डेटा हमारे यस नंबर्स में है. स्कूटर्स यस सर. कितने से ग्रो हुआ कितने से डिक्लाइन हुआ यहाँ पे लिखा है डू 25%. क्या रीजन है नहीं पता है तो इसके लिए बोल रहा है कंटिन्यूस स्कूटर्स क्यों ग्रो हुआ है आई क्यूब ग्रो हुआ है उसमें नंबर्स यस होने सर चाहिए आई हमारे थिंक. पास. नंबर्स हमारे पास यस नंबर्स है मंथली नंबर्स जो मंथली रिपोर्ट बनाते हैं यस सर. न्यूज़पेपर में भी आता रहता है. यस सर. तो वो स्कूटर्स में क्या हुआ है ले वो लोग ने नहीं दिया तो उनको लिखना है. फिर ईवी में क्या हुआ है स्कूटर्स में ही ईवी है ईवी में क्या हुआ है ओके सर. एंड देन इट शुड कम एट द एंड.
कि अनाउंस ग्लोबल कमबैक ऑफ वो नॉर्थन की भी बात की तुमने, नॉर्थन के बारे में नहीं लिखा है? सर नॉर्थन के बारे में लिखा ना, अनाउंसमेंट इट्स ग्लोबल कमबैक नॉर्थन लास्ट में। अच्छा ओके, किधर है? ठीक है। एज ICA में 2000 नॉर्थन कमबैक इट्स ग्लोबल, नॉर्थन इज ओके। ग्लोबल कमबैक। यस सर। हाँ तो वो इट शुड बी इन द स्कूटर साइकिल ना, कि नॉर्दर्न पार्ट मोटरसाइकिल्स का पार्ट है, क्योंकि ओके जब मैं नॉर्दर्न सुनूंगा मुझे नहीं पता नॉर्दर्न क्या है। ओके। करेक्ट। तो अनविलिंग फॉर प्रीमियम मोटरसाइकिल, तो स्कूटर्स में मुझे पता है, मोटरसाइकिल में प्रीमियम। तो मेरा क्या होगा एनालिसिस कि अच्छा मार्केट इसका फिर सेल्स बढ़ेंगे एंड मार्जिन भी इंप्रूव होंगे इसके फिर, जस्ट बिकॉज दे ओके आर कमिंग टू प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड चार ओके मॉडल बना रहे हैं। Okay? तो इसके प्राइसिंग भी तुम डाल सकते हो चाहिए तो, क्या प्राइसिंग पे आ रही है इंडिया में। ओके। ओके। अच्छा ये तुम्हारा चार्ट ऐसा क्यों है? वो चार्ट मैंने बताया था ना अलग से करना है। सर ट्राई किया था, पता नहीं मिक्सअप हो रहा है बार बार, या तो फिर वो अलग अलग लेना पड़ेगा। नहीं नहीं वो 100 मैंने कोई तो आपने पता नहीं मॉर्निंग मैंने कॉल कौन। में बताया था सर। सर हाँ मॉर्निंग अभी कॉल से ही मैंने देखा था वो भी, तब हाँ भी मैं, बाकी सारे सही आ रहे हैं, सर इसमें ही ऐसा हो गया। उसमें वो ठीक है, जाने तो वापस बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये देख लेना एक बार, कोई तो मैं देखता हुआ मिला है मुझे मॉर्निंग कॉल में तो। कहीं कोई है तो मुझे बताना, कोई आई डोंट रिमेम्बर कौन से मॉर्निंग कॉल में बताया था मैंने अभी। मैं भेज देता हूँ सर, आपको भेज देना। हाँ 43 डे वाला है। 43 था क्या डे? अच्छा डे 43 था, देख लेना ओके एक सर। बार। हाँ। ओके सर, अगले दिन दिखा। सर ओवरऑल आ, बाकी ठीक है। बाकी ठीक है हाँ, फॉर्मेट इज फाइन, फॉर्मेट इज टोटल फाइन। ये देखो मार्जिन है ना, क्रॉस हम्म। प्रॉफिट है, ठीक है। 45 35 है तो पॉइंट डाल सकते हो तुम, यहाँ पे दो क्यू है डिजिट्स, सर वो इतने क्यू है? बहुत माइन्यूट सा चेंजेस होते हैं हर क्वार्टर वाइज क्वार्टर, नहीं नहीं इसलिए। तो नहीं तो इतना ही लिखना है तुमको, नहीं दूसरा डिजिट डालना है। ओके सर। 23.1 ही लिख दो यहाँ पे, 29 पॉइंट क्यू है, 22.4, दो डेसिमल नहीं डालना है, एक ही है। ओके सर, एक इसमें दिखे डालोगे तो ठीक है, अदर्स में क्योंकि ये काफी छोटा है, एक। इसमें नहीं है। अभी ये 2 है तो तुम यहाँ पे, सिंस हमेशा 3 डिजिट लुक्स गुड, तो 35 पॉइंट अगर 2 बोला 2 डिजिट तो एक डिजिट एक डेसिमल तुम डाल सकता है एडिशनल। ओके। ओके फाइन, फाइन बाकी ठीक है। ओके, थैंक यू सर। Okay, okay, guys. I think it's too late. I have to leave. Thank you, guys. See, अपडेट करते रहो। शिवराज मैं तुम्हारा देखता हूँ ठीक है सर। स्पेसिफिकली। कल हेलो सर। कल मैंने प्रेजेंट किया था हेलो। मैम के सेशन में, तो एक बार देख अच्छा लीजिए। मैं ठीक है ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, गाइस, sir. थैंक यू एवरीवन। Thank you, थैंक यू sir. सर। हेलो ऋषभ सर। हेलो। या श्रद्धा। Yeah, it's Shraddha Sansare. I am a new joiner. Today is my first day. So अच्छा I am ओके। not getting how to start and from where to start. No, the first thing Shraddha, so you have to go to the morning call, वो है ना तुम्हारे ग्रुप पे, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में। Morning call, sir, हाँ, गुड मॉर्निंग 11 कॉल, to 12 वही ना 1 hour का। नहीं नहीं सॉरी, न्यूज लेटर राइटिंग जो है ना, गो टू द वीडियो ऑफ न्यूज लेटर राइटिंग, हाँ। ग्रुप डिस्कशन पे है। सो आज टुडे गो टू द वीडियो ग्रुप न्यूज़लेटर राइटिंग, वहां पे यू विल फाइंड यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स एंड कम अप विद अ न्यूज़ अपडेट एवरी डे। एंड वंस यू Okay, it's in description ना, the newsletter writing डिस्क्रिप्शन, link. यस न्यूज़लेटर राइटिंग, या सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू द मॉर्निंग कॉल में। हम वही करते हैं, अभी ये रिजल्ट लिख रहे हैं दोस आर फाइन, वो अलग पार्ट है, दैट यू डोंट हैव टू डू इट नाउ। वो तुम जब तुमको Okay, एक्सपीरियंस आएगा तब तुम वो सब करोगे। ओके, बट okay, फर्स्ट इज योर राइटिंग न्यूज, वो तुम्हारा इट शुड बी अ फर्स्ट पॉइंट। And you have to okay. send me on that number, oh, 77 number 77388, हाँ that हाँ number you हाँ. send me, and then you have to present it in the morning call, ये 11 से 12 में जो होता है, you have to present that. Okay, So what happens, okay, your writing skills improve and your presentation skills improve. okay. As of now you have to just do that part. Okay, thank you, sir. Okay, okay. हेलो सर। हेलो सर। हाँ yes, तो अंकिता या यहाँ किधर? तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक मुझे कंपनी का रिप्लाई आया था, एड अप्लाइड फॉर इट। तो उन्होंने Okay, ना मुझे क्वेश्चनर भेजा था, तो मैंने उसका आंसर्स लिख के डाला है PDF में। तो आप एक बार चेक करोगे, अगर वो राइट होगा तो। अच्छा ओके मैं पढ़ता हूँ, मुझे वापस एक बार पिंग करोगे? ओके पढ़ता सर। हूँ, ठीक है।
सर या हेलो सर, वो थोड़ा कंपनी प्रोफाइल एक बार रिव्यू करना सर। वो हाँ, इवनिंग मैम को प्रेजेंट करूंगा, प्रेजेंट तो इफ करो ना, दैट इज प्रेजेंट करने ओके। में क्या है, प्रेजेंट तो करो ना, there's no harm in presenting it. ओके सर। ठीक है, ठीक है। फॉर्मेटिंग इज दैट एवरीथिंग इज ओके सर? शुड आई चेंज I've not मेक एनी I've चेंजेस? not seen it. I've taken it as a priority. मैं देखता हूँ वो। ठीक है। ओके सर। बोलो हाँ। सर एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ हाँ, यस। हाँ सर, अभी मैं भी फ्री, मतलब अभी न्यू ज्वाइन ही हूँ मैं भी। तो अभी कौन से न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना बेस्ट होगा सर? आप कुछ सजेशन दे सकते हैं? इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स इज बेस्ट। वहाँ पे देखो ना, वहाँ पे लिंक है ना, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस फ्री में मिल जाता है। ओके। ओके सर। बाकी के लिए टेलीग्राम लिंक तो है नहीं इसमें। ओके। पर बाकी के लिए अगर टेलीग्राम तुम्हारे पास कोई लिंक है तो कैन फाइंड इट। या फिर अभी के लिए इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस आर ओके, उसके तो फ्री में न्यूज मिल जाते हैं, पेपर्स 7 बजे आ जाते हैं। ओके सर, मैं इकोनॉमिक वो टाइम से मैंने स्टार्ट कर बताया देता था। हूँ। हाँ, या, यस यस। ओके सर, थैंक यू सर। कीप ऑन राइटिंग तो दैट इट कैन इंप्रूव। हमको एक्सपीरियंस चाहिए। वी डोंट वांट कि हमको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप नहीं करना है, वी हैव टू डेवलप एन एक्सपीरियंस। ओके। यस सर। स्किल्स तो हो जाएंगे डेवलप। ओके। यस, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।